दोस्तों, इन दिस रिसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड कि कौन कौन पोजीशन में यू कैन स्टिल एंटरटेन अ रीट when there is some statutory remedies are available, means there is already some kind of remedies which are given in any kind of law, or even like a superseding that law, the high court can entertain any kind of writ petitions. तो इधर पे दोस्तों क्या हुआ था, there was this particular statutory sale under the SARFAESI Act. Court, this particular sale was going on, and in this particular proceeding, the particular borrower, he enforced his right under the Article 226 of the Constitution, though there was specific provision under the SARFAESI Act. तो सुप्रीम कोर्ट ने इधर पे बोला कि इसको बेसिकली it is not appropriate to entertain this kind of writ, and also the most important thing is that Supreme Court ने इधर पे clarify किया under the what circumstances, even there is some statutory provisions are there, they can entertain the writ, such as when the statutory authorities has not acted according to the provision of the enactment in question, means like when there is any specific law, और जो बेसिकली जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे और लेट्स से एनी अथॉरिटीज़ थे, वो लोग उस प्रोविजंस को बेसिकली ना मान्यता दिए हुए basically they have overacted on that particular provision. In that particular case, the writ can be applied. Now, second condition is that it has in defiance with the fundamental principle of the judicial proceeding. Means like there is no natural justice, they are not hard. There is like a ex parte hearing जहाँ पे ऐसे करके किया गया है, ठीक है. And like it has resorted to any kind of provision, the third provision जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि which the provision has already been repealed. In those particular scenario, if the a particular repealing provision has been enacted and enforced by any manner, तो उधर पे भी जाके the writ can be applied when there is some statutory provisions. And lastly is that if there is a total violation of the natural justice होता है, तो in that particular case also like the writ can be entertained. So basically mostly चार provisions हो गए इधर पे, जहाँ पे natural violation का natural justice का अगर कुछ violation होता है, or let's say any kind of legal principles का अगर violation होता है, then like if the law is repealed and still it is being enforced, and lastly जो हो गए, if there is any kind of special provisions are there, उस provisions को तोड़ के, like without not acting with the provisions, the authorities are overreaching in that particular provision, so like they are not going by that particular provision, then particular writ will apply in that particular case, even if there is some statutory provisions are there. Also, Supreme Court ने एक recent judgment में बोला है कि like if any kind of person who does not have a title, he executes any kind of document and subsequent the title owner, he cannot enforce any kind of right on that particular document. इसका मतलब है कि जो टाइटल ओनर जो बेसिकली आपको ट्रांसफ़र किया उसका पास क्लियर का टाइटल नहीं था, ही वॉज नॉट एक्चुअली द ओनर. तो ये बहुत ही सिंपल बात है कि दोस्तों जो आप अगर उससे अगर कुछ खरीदते हैं, यू गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम देम, देन ऑल्सो यू कैन नॉट एनफोर्स योर राइट एज अ ओनर. So in this particular case, what happened that the particular subsequent leaseholder, a wife of a deceased person, she tried to enforce her right as a owner. But it was clearly from that document only, it was clear that the person did not have the ownership of that particular property because she was only the leaseholder. तो कोर्ट ने इधर पे भी क्लैरिफाई किया, इवन देयर इज नो सच प्रेयर फॉर गिविंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल, बट कोर्ट जहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि देयर इज नो टाइटल, कोर्ट डू नॉट have to go into the prayers and have to declare the document as a defective. They can simply ignore it and they can declare any kind of order on that particular facts only. There is no like don't need to go into the details or any kind of contested petition or let's say prayer whether the document is right or wrong. Only by simply looking at the document, in the face of the document, अगर document में कुछ गड़बड़ रहता है, then Supreme Court बोला है कि you can actually cannot enforce your right as a title owner in that particular property. दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब सेक्शन 27 में कोई एविडेंस को एड्यूस किया जाता है कोई मैटर में, तो it has to be always need to prove that that information was known to the police by any means before the information was disclosed by the accused. इसका कारण दोस्तों ये है कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्रोविजन जहाँ पे ओनली बाय द डिस्कवरी बाय द पुलिस अंडर द कस्टडी, पुलिस कुछ एविडेंस को बेसिकली डिस्क्लोज करता है, एविडेंस को बेसिकली उसको दे फाइंड एनी काइंड ऑफ न्यू एविडेंस, तो इस जगह पे उस एविडेंस को
अंडर पुलिस कस्टडी सेक्शन 27 में एड्यूस किया जाता है. अदरवाइज none of the evidences are actually any kind of, like a testimony or anything is given under the police custody is actually admissible, except on basis of those particular testimony some kind of discoveries has been made. Now इधर पे दोस्तों एक बात समझना चाहिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसी कारण में है, बिकॉज लेट्स से ये पुलिस हैज़ अ प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज कि लेट्स से a dead body has to be found over there. They can obviously made some implicating evidence over there, and on the basis of that they can say like नहीं हम लोगों को ये basically accused से मिला है that particular evidence, and then we are actually adducing that evidence under section 27. So on emphasis of that only this case was regarding murder 302 related with section 34. तो जहाँ पे बेसिकली हाई कोर्ट ने इसका बेसिकली कन्विक्शन को कंफर्म किया था, जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको जब चैलेंज किया गया तो द argument that was given by the accused is that it was clearly from the trial's evidences that police had the prior knowledge that the dead body can be found in that particular pond, and later on it was induced as a section 27 and evidence under the section 27. तो ये जो बेसिकली जो डिफॉर्मिटी जो बेसिकली जो लैकुना रह गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, इसके ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्यूज को बेसिकली they have acquitted the accused, stating that there might be like when there is a prior knowledge of the police that like some evidences can be found anywhere, and they are trying to pass on that particular information as a information retrieved from the accused under section 27. That may create serious problem, because that may like a police may try to implicate the person in a wrongful way. Let's say right now I'm just saying that the like I don't know a particular fact, and all of a sudden I say that I have retrieved the fact from the particular accused, knowing from the very before the accused said anything, then I cannot adduce those particular facts under the section 27. Otherwise it will be violative of the provisions under the section 25. तो इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इलाबोरेटली इस जजमेंट में कहा गया. दोस्तों आज का जो लास्ट न्यूज़ है उधर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पावर होल्डर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, ही कैन एक्ट अप टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन अंडर द पावर. ही कैन नॉट गो अंडर द एम्बिट ऑफ द पर्सनल नॉलेज ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन दैट पर्टिकुलर पावर. तो बेसिकली इसका मतलब दोस्तों यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका जो पावर होल्डर है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, उसको जो एम्बिट और पावर बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी में दिया गया है, ही हैज़ टू वर्क एंड एक्ट अपॉन दैट, ही कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. तो इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एक पर्टिकुलर पर्सन का टेस्टिमोनी को डिसमिस करते हुए बोला कि दैट पर्टिकुलर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर डिड नॉट हैव द jurisdiction or he was not given power to represent in a particular suit on behalf of the person who has given the power. तो उसी कारण में बेसिकली है कि दोस्तों इसका मतलब यही है कि द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन वर्क up to the ambit of the information provided in the power of attorney. They cannot go beyond that, which is the knowledge or let's say capacity of the person who has given the power. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है. अगर आपको कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. धन्यवाद.